Hello everyone. In this video, we will dive into the basic concepts of matrix through questions. If you want to learn about the basic concepts of matrix, please check the video shown in the screen. I will leave the link of the video in the description. So the first question we will solve in this video is displayed on the screen. In the question, a matrix is given and we have to write order of the matrix, number of elements in the matrix, and we have to find some elements. So first we have to write order of the matrix. To write order of the matrix, you should know how many rows and how many columns are there in the matrix. So what is row? Row is the horizontal line of elements and column is the vertical line of elements. So here, this is a row, this is a row, and this is a row. So there are 3 rows in the matrix, and this is a column, this is also a column. Therefore, in the matrix there are 4 columns. So this matrix has 3 rows and 4 columns. Now we will write order of the matrix. So order of the matrix is 3 by 4. 3 is number of rows and 4 is number of columns. Let's say matrix में m number of rows है and matrix में n number of columns है. So order of the matrix will be m by n. So it looks like this is m into n, but ये m into n नहीं है. ये बेसिकली ऑर्डर के लिए हम लोग को m into n का फॉर्म में लिखना होता है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है. सो व्हेन वी से ऑर्डर, वी हैव टू रीड दिस एज m by n, नॉट m into n. ठीक है. So our order is basically 3 by 4, not 3 into 4. So order of the matrix is number of rows by number of column, hence 3 by 4. ठीक है. Now we will see number of elements in the matrix. So to find number of element in the matrix, we have to multiply number of rows and number of columns. So number of element in the matrix is a number of rows into number of column. So number of rows in the matrix is 3 and number of column in the matrix is 4. 3 into 4 is 12. So basically we have just multiplied number of rows into number of column. Okay. On multiplication I got 12. So 12 is the number of element in the matrix. So we don't need to count the elements. Just multiply number of rows and number of columns. We will get number of element in the matrix. Next we have to write element A13. We have to write element A13. Now there is a number in the subscript. This number represents the location of the element in the matrix. So here is a 2 number. First is 1, second number is 3. So first number represents the location of the element in the row and the second number represents location of the element in the column. 1 represents first row, 3 represents third column. Element in the first row and the third column is basically 19. So A13 will be 19. Next we have to write element A21. We have to write element A21. So 21 means second row and first column. Okay, 21 means second row and first column. First number represents location of the element in the row. Second number represents location of the element in the column. So 2 for second row, 1 for first column. So second row, first column. Element in the second row and first column is 35. So the answer will be 35. Okay. Next we have to write element A33. So A33 means third row, third column. So element in the third row, third column is basically -5. So answer will be -5. Next element is A24. So A24 means second row and fourth column. So element in the second row and in the fourth column is basically 12. So answer will be 12. Next is A23. A23 means second row and third column. Element in the second row and third column is 5 by 2. So the answer will be 5 by 2. Okay? This is how you find the elements. Now we will move on to next question. So next question is displayed on the screen. In this question it is said that a matrix has 24 elements. So what is the possible values of the order of matter? First let me write total number of element in the matrix. Total number of element in the matrix is 24. Okay, now we can find total number of elements by multiplying number of rows and number of column. So number of rows multiplied by number of column is 24. M is number of rows, N is number of column. Now we have to find possible values of Mn, or we can say M by N. Now how to find M by N? Now we know that 1 multiplied by 24 is 24. So इसको हम लिख सकते हैं 1 multiplied by 24 is 24.
ऑल्सो आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 24, ऐसा हम लिख सकता. सो वी कैन लाइक दिस वी कैन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m बाई n. अब यहाँ पे क्या है, अगर मैट्रिक्स में एक रो है एंड 24 कॉलम्स है, in that case the matrix will have 24 elements. And if a matrix have 2 rows and 12 columns, in that case also matrix will have 24 elements. So we will write all the possible values. So I can write 3 multiplied by 8 is also 24, and I can write 4 multiplied by 6 is also 24. Also 6 multiplied by 4 is 24, and 8 multiplied by 3 is 24. Similarly 12 multiplied by 2 is 24, and 24 multiplied by 1 is 24. Now अब किसी को डाउट आ सकता कि 2 into 12 and 12 into 2 is 24, दोनों इक्वल हो गया. बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस केस में मैट्रिक्स में 2 रोज है एंड 12 कॉलम्स है, बट इस केस में 12 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. सो दोनों डिफरेंट है. ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 24 आता है, बट मैट्रिक्स डिफरेंट है. सो द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी, possible order of matrix will be 1 by 24, 2 by 12, 3 by 8, 4 by 6, 6 by 4, 8 by 3, 12 by 2 and 24 by 1. So these are the possible order of the matrix, and this is how you find possible order of the matrix. So क्वेश्चन का आगे पूछा है कि if there are 13 elements in the matrix, so क्या होगा. So possible orders क्या होगा अगर मैट्रिक्स में 13 elements है. So if there are 13 elements, then सिर्फ दो possibility है. 1 into 13 will be 13 and 13 into 1 will be 13. That means possible orders of the matrix will be 1 by 13 and 13 by 1. ठीक है, so these are the possible orders of the matrix. Now we'll move on to next question. So next question is displayed on the screen. We have to construct a 2 by 2 matrix. First we will write general form of 2 by 2 matrix. So 2 by 2 matrix means this is a square matrix and there will be 4 elements in the matrix. 2 by 2, 2 into 2 is 4, so there will be 4 elements in the matrix. So first we will write general form of the matrix. So this is the first question of question number 3. General form of the matrix will be, the first element will be A11. Why A11? So small letter a is used to represent element. The number in the subscript is used to represent the location of the element. So 11 means first row, first column. Similarly, the element next to it will be A12. Why 12? Because element next to it is in the first row and in the second column. So first row, second column means 1 2. Now element below the first element will be A21, because this element is in the second row and first column. So second row, first column means 2 1. The element next to it will be A22, because this element is in the second row, second column. Now this is the general form of the 2 by 2 matrix. We have to find all these elements. The first element is A11. We have to calculate A11. Now you can compare and see, in place of I there is 1 and in place of J there is 1. So I के जगह पे 1 substitute करना है and J के जगह पे 1 substitute करना है. So on substituting I will get 1 plus 1 whole square plus 2. So इसको solve करने पर क्या आ जाएगा? 2 square divided by 2 is 2. So final answer will be 2. Next element is A12. Now here in place of I there is 1 and in place of J there is 2. So I के जगह पे 1 substitute करना है and J के जगह पे 2 substitute करना है. Substitute करने पर क्या आ जाएगा? Substitute करने पर 1 plus 2 divided by 2. Sorry, 1 plus 2 whole square divided by 2. Now 1 plus 2 square is 3 square, which is 9. 9 divided by 2 will be the element A12. Next we have to find A21. A21 is basically, so I की जगह पे 2 है and J की जगह पे 1 है. So substitute करने पर क्या आ जाएगा? 2 plus 1 whole square आ जाएगा divided by 2, and the value of 2 plus 1 whole square divided by 2 will be 9 by 2. Similarly we have to find A22. A22, that means I की जगह पे 2 है and J की जगह पे 2 है. So 2 plus 2 whole square divided by 2. So 2 plus 2 square means 4 square, which is 16 divided by 2
is 8. ठीक है. So these are the element of the matrix. Now we will put the element in the matrix. So the final answer will be 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. So this is the square matrix. Now we will see next question. So this is next question Aij. So for this question also we have to construct a 2 by 2 matrix. And we have to find the same elements. Now to find elements we will substitute I, the value of I and j. First we will find a11. So I will be 1 and j will be 1. So 1 by 1 is 1. Next element is a12. So I is 1 and j is 2. On substituting I will get 1 by 2. Next element is a21. So I is 2, j is 1. On substituting I will get 2. Next element is a22. So basically I is 2, j is 2. On substituting I will get the value 1. So matrix A is basically 1, 1 by 2, 2 and 1. So this is the 2 by 2 matrix that was asked to construct. The next question is displayed on the screen. In this question we have to find the value of x, y and z. And question में एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है और यू कैन से कि दो मैट्रिक्स इक्वल है ये दिया हुआ है. ठीक है. जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होता है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है एंड दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. So we will use this property to solve the equation. Now since दोनों मैट्रिक्स का corresponding elements equal होता है, we have to equate corresponding elements and we have to find the value of x, y and z. First we will equate the first elements of the matrix. So first element of the first matrix is x plus y and second matrix is 6. So on equating I will get the equation x plus y equals to 6. Next we will equate third element because यहाँ पे 2 है. So 2 equal to 2 इससे मेरे को वैल्यू नहीं मिलेगा. Then we will equate this element which is 5 plus z equals to 5. Next we will equate the fourth element which is x into y equals to 8. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को x, y, z का वैल्यू निकालना है. So from this equation I can find the value of z. क्योंकि ये z कैंसिल हो जाएगा. Then remaining value will be 0. और हम इसको ऐसा भी बोल सकता, लेफ्ट हैंड साइड में जो 5 है उसको हम राइट हैंड साइड ले लेगा तो वो -5 बन जाएगा एंड द आंसर विल बी 0. नाउ वी हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग टू इक्वेशंस. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आई कैन फाइंड y. सो y विल बी 6 माइनस x. अब क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है. सो पुट करने पर क्या आ जाएगा, x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8. नाउ x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने पर 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ जाएगा. यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड में ले लेगा एंड ये 6x को भी राइट हैंड साइड में ले लेगा. लेने से क्या होगा, 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 आ जाएगा बेसिकली, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने क्या था, माइनस था. सो राइट हैंड साइड में आ गया तो प्लस हो गया. 6x के सामने प्लस था, राइट हैंड साइड में गया तो माइनस हो गया. सो आई गॉट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड x. तो सॉल्व करने पर मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. ये जो माइनस 6x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस 4x माइनस 2x लिख सकता, क्योंकि माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज 8. सो हम इसको ऐसा लिख सकता. अब यहाँ पे हम क्या करेगा, x कॉमन ले लेगा. सो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो x माइनस 4 रिमेनिंग रहेगा. यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करने पर x का वैल्यू 2 आ जाएगा एंड x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करने पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ठीक है. सो मेरे को x का दो वैल्यू मिले. अब जब x का वैल्यू 2 रहेगा, व्हेन x इक्वल्स टू 2, सॉरी यहाँ पे x आएगा. सो व्हेन x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे पुट करने पर y विल बी बेसिकली 4. नेक्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू 4, सो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा. सो दो फाइनल आंसर होगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल्स टू 0. ठीक है. एंड दूसरा सोल्यूशन क्या होएगा, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 0. सो ये है पहला सोल्यूशन, ये है दूसरा सोल्यूशन. दोनों सोल्यूशन सही है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z when two equal matrices are given to you. Next we will see another question.
So this question was basically from the topic equality of matrices. So दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा? जब order of the matrix will be equal and corresponding elements of both the matrix will be equal. Next we will see another problem from this topic equality of matrices. Now we will solve this question that is displayed on the screen. Now in this question again two matrix equal है दिया हुआ है. अगर टू मैट्रिक्स इक्वल है मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम रहेगा एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम रहेगा. बाय इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी. सो लेट्स फर्स्ट इक्वेट द एलिमेंट्स. सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज a माइनस बी एंड माइनस वन. दोनों को इक्वेट कर लिए. सेकंड एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5. थर्ड एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0. फोर्थ एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. नाउ ये दोनों इक्वेशन में वेरिएबल a एंड b है, सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. सो a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस वन, ये पहला इक्वेशन है. एंड दूसरा इक्वेशन क्या है? 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0. टू एलिमिनेट b वी हैव टू चेंज द साइन. सो साइन चेंज करने पर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता है. सॉल्व करने पर माइनस बी प्लस बी कैंसल. a माइनस 2a इज माइनस a, माइनस वन माइनस जीरो इज माइनस वन. सो माइनस a माइनस वन विल बी a इक्वल्स टू 1. सो ये है पहला वैल्यू. नाउ a का वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम c निकाल सकते हैं. सो 2 इंटू वैल्यू ऑफ a प्लस c इक्वल्स टू 5. c विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2. सो c इज बेसिकली 3. ये है सेकंड सोल्यूशन. नेक्स्ट c के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके d निकाल सकते हैं. सो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13. फ्रॉम हियर d विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है. प्लस 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा. सो d की वैल्यू निकल के आ जाएगा 4. एंड a के वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम b निकाल सकते हैं. सो 2 इंटू 1 माइनस b इक्वल्स टू 0. सो b को उस तरफ लेके जाएगा तो 2 इक्वल टू b, hence b equals to 2 is the answer. ठीक है, so these are the values of a, b, c and d. Now we'll move on to next question. So next question is a multiple choice question. In question, a general form of the matrix is given to you. Matrix is given a into in bracket aij in subscript m by n. So ये है general form of the matrix. ये एक basically notation है for any matrix. m by n is order and aij is the general element for every element in the matrix. So question में पूछा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m and n का रिलेशन क्या होगा. Now for a square matrix, number of rows in the matrix is equals to number of column. So number of rows is basically m and number of column is basically n. So for square matrix, m will be equal to m. So C is the correct option. Now we'll move on to next question, which is also a multiple choice question. So this is the next question that we will solve now. क्वेश्चन में पूछा है कि x and y का किस वैल्यू पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा. नाउ बेसिकली we have to equate this matrix and we have to find the value of x and y. So let me put equal sign between these two matrix and let's calculate the value of x and y by equating the elements. क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है so we can equate the corresponding elements and find the value of x and y. Let's equate the first element of both the matrix, which is 3x plus 7 is equals to 0, and we can equate the second element, which is 5 equals to y minus 2. ठीक है, so on equating first element I got 3x plus 7 equals to 0. अब इसको सॉल्व करना है तो 3x plus 7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -7 हो जाएगा. So the value of x will be -7 divided by 3. And from here we can find value of y. So y will be basically 5 plus 2 and y will be equal to 7. So value तो निकल के आ गया. ठीक है, बट हम लोग को चेक करने की सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट में भी x है. ठीक है, सो आफ्टर इक्वेटिंग फोर्थ एलिमेंट 2 minus 3x equals to 4 मेरे को इक्वेशन मिलेगा. एंड वी कैन फाइंड x फ्रॉम हियर. सो 2 minus 4 equals to 3x. 3x को हम राइट हैंड साइड ले लिया, 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ला दिया. सो 2 minus 4 is -2 equal to 3x. From here x will be equals to -2 divided by 3. अब from the first equation I got x equals to -7 by 3 and from the second equation I got x equals to -2 by 3. So ये गलत आ गया. ठीक है, ये दो डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकता. दो डिफरेंट वैल्यू मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट बन जाएगा, बट अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ही होना पड़ेगा. सो ऐसा दो वैल्यू आने से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं आएगा. देयरफॉर ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है.
So we cannot calculate the value of x and y. So the correct option will be not possible to find, which is option B. Now we'll move on to next problem. So this is the next question that is displayed on the screen. Question में पूछे है कि how many 3 by 3 matrix can be formed by using the number 0 and 1. That means each element can be either 0 or 1. So 0 और 1 को लेके 3 by 3 का कितना मैट्रिक्स हम फॉर्म कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछे. Now if you see clearly, every element can be 0 or 1. Means every element have two options. Every element have two options. ठीक है, हर एक एलिमेंट के जगह पे या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है. तो कितना ऐसा मैट्रिक्स हम फॉर्म कर सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3 by 3. सो एवरी एलिमेंट हैव टू ऑप्शंस. ये जो हम 2 लिखा है ये एलिमेंट नहीं है, ये ऑप्शंस है. और ऑप्शंस के ऑप्शंस है 0 और 1. नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आई कैन से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स can be formed will be 2 into 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 2, ऐसा 9 टाइम्स आएगा. ठीक है, ऐसा 9 टाइम्स आएगा. सो बेसिकली 2 power 9 is the total number of matrices I will get. So 2 power 9 is basically 2 power 10 divided by 2, and 2 power 10 is 1024 divided by 2 will be 512. So this is the final solution for the given question. So this is how you solve the questions of matrices. In the next video, we will solve more questions from the chapter and understand the concepts behind the questions. If you want to learn the basic concepts of the matrix, then check the video on the screen. Subscribe and stay tuned for more videos. Thank you for watching this video.